Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab. Hello and a warm welcome to SOUMYA Datta ji. Once again, thank you very much. The other day, even बर्तन वाला कंपनी भी आज शांति में शामिल हो सकता है. शांति माने न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी. It has gone very well with the commoner. They have understood what reactor is, what the mining is, then reactors, the process of generating fuel, and what are the nuclear materials, and how dangerous it is. So that Bardhanwala example has stood very well. Now today we will take up in the same vein. That also will come back. Shanti, many were asking. We will certainly come back to you in a series. But today, AQI. What is AQI? Air Quality Index. Everyone is talking about Delhi. Delhi has become a gas furnace now. And the chief minister says it is because of this. And there was another journalist who says, before he said, it is because Kejriwal could not do anything. 10% of the lifespan has come down. Now, after BJP came to power, he says it is because of Aravalli forest surrounding Delhi and air is trapped. So many theories. Let me just show you a quick Soumya Datta's sent me some this thing so that we can straight away get into the show. Yeah. I think this is what you have done, sir. Am I right? Yes, this I generated with software. Yeah. Now I'll start with this. Can you explain this? Take a deep breath. Air quality index AQI 500, hazardous, attempt to murder. What is this? See, air quality, this is not an exaggeration. Let me tell you. Yeah. In fact, when I wrote this, I designed this with the air quality index 500. AQI is air quality index as it is written there. And India Gate symbolizes Delhi. India Gate top is visible on top. Yeah. So even today morning, when I checked, the air quality in the place that I live and Central Pollution Control Board station is very near. It was 500 plus, 589. The Anand Vihar area, which is around 4 kilometers, 3-4 kilometers, it was close to 600. Yesterday evening, it was again all across Delhi, most places, 560, 580. So this is, by any standard, this is called very hazardous. That means even healthy people can fall sick and can slowly, if they are exposed to this regularly, they can die. They can have contract serious lungs and heart disease, and they can die because one component of this air quality is very fine particulates, which is called PM 2.5. That is 2.5 micron or less. Micron is 1 millionth of a meter. So it's very fine particle, which is not stopped, as most of us know. When we breathe in air, whatever dust and other things are there, particulates, if they are bigger, they are stopped by the hair inside nose. And some of these even finer, they are stopped by the mucus layer in our respiratory tract. Our respiratory tract is covered with mucus. So those viscous liquid, they also capture a lot of particulates. But if it is very fine, that is PM 2.5 or even smaller, that means 2.5 micron or even smaller, then these things don't catch them. So they go directly to the lungs, and through the lungs, because the lungs is the place where blood gets oxygen. So the blood comes pumped by the heart, comes to the lungs. So there, these particulates, which are chemical laden, which are not just dust, not just soil, they get into the bloodstream also. So they cause a lot of diseases in the respiratory tract and also in the cardiovascular system. So this leads to a lot of heart disease, a lot of respiratory disease, and this can also lead to cancer. And a lot of people are actually suffering that. Doctors are reporting. In fact, just the other day, the National Convention of Jan Swasthya Abhiyan was there in Delhi, 2 days. And we were presenting on the climate change impacts. But one doctor also said, who was in the panel, senior doctor, a professor,
that they have seen a very sharp rise in cancer cases from a younger population. He said 20 years ago, he used to see more cancer cases in 55 plus population. Nowadays, he is seeing a lot of cancer cases in 40 age population, 40, 35, 40, 42, that age population, lot of cancer cases. And this can be very clearly connected with the continuous very high air pollution in the entire Delhi NCR and the Gangetic basin. So this, I'll also come to what a lot of people are talking nonsense about this, because they are saying because of the Aravallis, because of this, because of that, because of BJP or AAP. See, there are a lot of what we call source apportionment studies. Scientific, rigorous scientific studies have been done over Delhi and Delhi NCR pollution, air pollution. When we are talking about pollution now, we are talking about air pollution. So it's not just the Aravallis it is coming through. It is whether this chief minister, present chief minister, or the earlier up political party leaders, or the Congress leader, or some journalist, as Dr. Reddy mentioned, they are talking nonsense. In fact, the studies showed that 22 to 24% of Delhi's air pollutants are coming from Delhi NCR's vehicles, cars, two-wheelers, trucks, buses. So that's a repeated study that has been shown that is almost one fourth, a little less than one fourth of the entire air pollution comes from Delhi's vehicle. Delhi means Delhi NCR, Delhi, Ghaziabad, Noida, Gurgaon, all these cities together, and they are almost equally polluted. Sometimes one is a little less, other is a little higher. So this obviously Aravallis don't have a lot of vehicles. So this is not coming from Aravallis. Second, it shows that one of the major sources of Delhi's pollution, particulate pollution, is road and construction dust. Here, the what we call cross-boundary or trans-boundary air pollutant transport, which are coming from far-off places, they have a contribution. But it has also been shown that the 11 coal power plants, which are situated within 300 kilometers of Delhi, 11 coal burning power plants, they contribute a major part of these pollutants, particulates, which are coming from outside Delhi's boundaries. So that's one. It has also been shown by the same studies, and there are 5, 6 different scientific studies, that a major part is construction dust and road dust. So the road dust, a part of the road dust comes from any other construction and other activities. A part of the road dust, very fine dust, comes from tire wear. That means when Delhi NCR, and these figures need to be understood, Delhi NCR has 2.9 crores vehicles, 2.9 crores, whereas Delhi NCR might be having 5 crore people. It has got 2.9 crores vehicle, and out of that, roughly 90 lakhs to 95 lakhs are cars. So they emit a huge amount of emission when they are running. One, from their engines exhaust. Second, when all these almost nearly 3 crores vehicles are running, their tires also wear out. Very fine particle, which is called tire wear. So that those particles are also emitted, and these also constitute a part of the air pollutant, particulate pollutant. So obviously, there is a small contribution which comes from the Aravallis, but it's not because the Aravallis is there, it is preventing. In fact, in the Aravalli Hills now, Aravalli range, there are a lot of places where stone quarrying and stone crushing is going on. If you go to Alwar, if you go to Nimka Thana, all these areas, you will see Rajalbash, Ramalbash, you will see a lot of stone mines, stone quarries. And when the stones are taken out, they are crushed to supply the huge demand for concrete. There is a huge construction boom in the entire NCR area, the National Capital Region area. Road construction, highway construction, house, hospital, public infrastructure, everything is being constructed. And as you know, for these constructions, along with cement, steel, stone chip, sand, and stone chip, these are grit, these are required. So
all this stone supply, stone chip, and some of the other material, including sand, comes from the Aravallis. So that contributes quite a bit of dust pollution. But one thing needs to be understood: if you go for stone crushing, the major percentage of it is PM10. Very little of it goes into PM 2.5. PM 2.5 is extremely fine. So the stone crushing gives rise to more of PM10. So even if I am not saying, let me be very clear, Aravallis is very important. The Aravalli range needs to be preserved. The mining needs to be stopped. But this stupid arguments that because of the Aravallis the pollution is not coming, and the pollution now Rekha Gupta says because the Aravallis is, and her own government is giving clearance. It's not any other government. In fact, Haryana, Rajasthan, now it's the BJP government. So she should also fight with her counterparts in Haryana and Rajasthan not to give permission for Aravalli's stone quarrying and stone crushing. And this is going on whether there is a Congress government or there is a BJP government. Any party. This is going on for decades and decades. So one thing is, as part of the particulate pollution of Delhi, air pollution, in terms of particulates, comes from stone crushing in the Aravallis. But the Aravallis do stop a little bit of pollution coming from the west, coming with the wind from the west, but that is not a major contributor to Delhi's air pollution. The other major gaseous pollutions in Delhi, the sulfur dioxide, the SOx, NOx, ground level ozone, the Aravalli, west of Aravalli, there is no major source of SOx, NOx and ground level ozone. So it is Delhi's own pollutions which constitute a major part. 60% of Delhi's pollution, or maybe a little more, gets generated, produced within Delhi or Delhi NCR. When I'm talking about Delhi, it is Delhi, Ghaziabad, Noida, Gurgaon, all together. Rohtak, all together is Delhi NCR. So Delhi NCR is almost equally polluted. So let us not divert the attention with these stupid arguments that the Aravallis, because of Aravallis, this is coming. Because the Aravallis did stop a little bit of the pollution, no doubt about it, because it's a low hills. Some air is slowed down. So when the air direction changes in the month of October, after the monsoon, as we know, probably people should know, that till the month of mid-October, the wind towards Delhi comes from southwest and southeast. So there is no chance that those winds will carry dust from the Thar Desert, because the wind is not coming through the Thar Desert. So why there is high level of pollution in September? Why there is high level of pollution in April or March? So this argument that the Aravalli stops all the pollution, or because of Aravalli this pollution is coming, it is completely baseless, no scientific understanding, because we have to understand that the wind direction changes after monsoon, and by mid-October to late October, the wind starts coming from northwest. So then there is a possibility that the dust will be carried from the Thar Desert. Yes, that's true, but after mid-October. So when that's why when the stubble burning happens in Punjab and Haryana, to some extent, that also is carried to Delhi side. Delhi and Ghaziabad and Western UP, it carries. But that's a shorter duration. So it's there, Aravalli has a role in preventing or stopping part of the pollution transport, but Aravalli is neither the major reason nor the major factor in stopping Delhi's pollution or adding to Delhi's pollution. But the Aravalli judgment that the ministry, the Aravalli proposal that the Ministry of Environment, Forest, Climate Change submitted to the Supreme Court, and Supreme Court, without understanding anything, you cannot have more stronger comment, then you will be liable to contempt of court maybe. So without any understanding, the Supreme Court really accepted a definition which is, to set it properly, it's very laughable. Laughable, completely misunderstood, no science, no knowledge, no understanding behind that, because no hill range or mountain range can be defined by the exact height of the topography. In that sense, if there are a lot of animals, there are a lot of animals in the Aravallis. So the leopards and other animals
have to jump from places of 100-meter plus to another place 100-meter plus. Because if they come down to cross, then they will be not passing through the Aravalli. So they will be denied the right to pass. So only by jumping from 100-meter plus places to 100-meter plus spaces. So Supreme Court should be told this. So do you think the animals will also jump from 100-meter plus places so that they can travel in Aravallis, because which is their home? So I think this proposal and the acceptance of that proposal is really bordering on stupidity. I don't know, incredulity. People are incredulous. People are trying to think that how, in what state of mind that the judges accepted this. Did they apply their mind at all, or they were somewhere else? Probably. So I think that judgment, there is no question that needs to be withdrawn. Even though the ministry is saying that, okay, we will not allow permit mining, etc., that's an eyewash, because if they do not want mining and other quote unquote development, because the Aravallis not only being eyed for mining, that is one major purpose, but lot of moneyed people are eyeing lot of places in the Aravalli for good places to live in, luxury housing, resorts, etc. And Delhi NCR has a lot of money, lot of moneyed people. So a lot of these people are targeting the Aravallis for very high-end housing, high-end resorts, etc. So I think this is also the second purpose of the ministry, because our ministry of MOFCC is the Ministry of Environment and Forest Clearance, callously. I think CC is not climate change, Ministry of Environment Forest Clearance, and callously. So we should call that. So they have given this claim, Okay. keeping in view that all the moneyed people should get quick clearance. Okay. Okay. So now, what you mean to say? अब थोड़ी हिंदी में भी हम दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं. तो ठीक आप है. कहते हैं कि जो प्रदूषण जो भी है, ये प्रदूषण जो भी है अरावली से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये धूल जो उठता है, जो हम ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं और साथ में हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके बदौलत, और थोड़े इंडस्ट्रीज, तो यही है ना, अब जो परिश्रम है इसके बदौलत ही आज दिल्ली की जो हवा है इतनी प्रदूषण वाली है, और वो जीने की, अगर परिभाषा में कहे तो स्वस्थ जीने की लायक नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल रीजन हम कहते हैं, न्यू दिल्ली कैपिटल रीजन, ये तो देश का राजधानी है, और देश के राजधानी में इस तरह की जिंदगी अगर कोई हमारे नागरिक जी रहे हैं, क्या मिसाल देता है ये दुनिया को. सो दिस सॉर्ट ऑफ देखिए, लिविंग, तो स्टैंडर्ड्स यस, ऑफ लिविंग, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, what is that we are presenting to the entire world? We say we are going to be a global so and so, and with economy so and so, and but how is that Delhi is presenting itself in such a pitiable position? What do you think of this? ये तो हमें मैं थोड़ा हिंदी में इसको एक करूं, यदि जैसे आप हिंदी में भी बात कर रहे थे, तो Yeah. दिल्ली का सभी लोग अभी जानते हैं ये दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है. न किसी भी देश का राजधानी इतना प्रदूषित नहीं है. उस मामले में ऐसे तो दिल्ली बीच बीच में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो जाते हैं, लेकिन कुछ और शहर है जो दिल्ली से भी प्रदूषित है, उसमें ज्यादातर भारत में ही है. मतलब ये भी हमें समझना चाहिए, ये हम सिर्फ दिल्ली का ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जो डेटा दिखाते हैं, आंकड़ा जो दिखाते हैं, वह है भारत का 62% से ऊपर हिस्सा, कभी कभी किसी साल 70% से ऊपर, जो भारत का अपना ही जो मानक है, एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी नॉर्म्स, उससे काफी ऊपर है. तो मतलब ऑलमोस्ट 70% भारत का जाएगा प्रदूषण, वायु प्रदूषण से साल भर भुगतते हैं. एक्सेप्ट जो मानसून मंथ होते हैं, जब बारिश हैवी होता है, तब हवा क्लियर हो जाते हैं. बाकी जैसे ही बारिश खत्म होते हैं, फिर 15-20 दिन महीने के अंदर वही स्थिति आ जाते हैं. तो ये तो एक दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी होने का, ये तो कोई गौरव की बात नहीं है, शर्म की बात होना चाहिए. लेकिन हमारे जो अभी नेतागण है, इनका कोई शर्म बोल के कुछ है नहीं. मैंने वो, उनको डिक्शनरी में शर्म बोल के कुछ है नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी कुछ नहीं है, शेम भी कुछ नहीं है.
तो खाली झूठ बोलना, कुछ ना कुछ बहाना देना, ये ही उनका काम है। और ये सिर्फ नया कुछ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। करीब 18-20 साल पहले बीजिंग, जो चाइना का राजधानी है, बीजिंग भी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में एक गिना जाता था। पर जब बीजिंग का ओलंपिक का डिसीजन हुआ, सरकार वहाँ का डिसीजन लिया, उन्होंने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लिया, और आज बीजिंग का एकदम ब्लू स्काई, आप नील आकाश देख सकते हैं। में बीजिंग का पोल्यूशन लेवल काफी ड्रास्टिकली कम हो गया। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का ये नहीं है, हम जानते हैं कैसे करना है। जैसे मैंने बोला था, दिल्ली का ये जो अरावली लेके और दिल्ली लेके जो इतनी सारे बकवास चल रहा है, क्योंकि ये भी आते हैं। आप देखिए, कुछ महीना पहले पूरी देश में ट्रेंडिंग था लद्दाख एंड सोनाम वांगचुक। सारे लोग जो मणिपुर में भी बैठ के, और कलकत्ता में भी बैठ के, और हैदराबाद में भी बैठ के, और लोग वही करे जा रहे थे, लद्दाख और सोनाम वांगचुक। तो अभी लद्दाख एंड सोनाम वांगचुक आउट ऑफ फैशन चला गया, अभी अरावली फैशन में आ गया। तो मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही मध्य प्रदेश में एक वर्कशॉप करवा रहे थे, तो वहां भी देखा लोगों ने मध्य प्रदेश का जबलपुर में बैठ के, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में बैठ के अरावली अरावली बोल रहे हैं और कुछ ये कर रहे हैं, जबकि समझ उनका बहुत कम है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग जिंदगी में अरावली देखा नहीं है, गया ही नहीं है, लेकिन अभी कर रहे हैं। ये भी फैशन होता है। तो अभी अरावली का फैशन चल रहा है, और अच्छा है ये मीडिया में, क्योंकि इतना स्टूपिड एक इसके ऊपर एक सिद्धांत आए है, ये 100 मीटर से नीचे जो लोकल प्रोफाइल, उसके ऊपर 100 मीटर से नीचे जो होगा वो अरावली पहाड़ नहीं है। तो इस ढंग का तो भयानक स्थिति है। तो लेकिन लोगों का ये फैशन अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद अरावली भी आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, नया कुछ आएगा। तो ये चलते रहते हैं। लेकिन इसके चलते जो गड़बड़ है, जो 99% पर 95% से 97% लोग जो बोल रहे हैं, उसमें साइंस कुछ है नहीं। अभी जैसे आपने उदाहरण दिया, अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो अरावली के लिए आ रहा है, जबकि दिल्ली के ऊपर अच्छा सा सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी, जो कहाँ से कोई प्रदूषण आ रहा है उसका जो शोध हुआ है, उसमें कानपुर आईआईटी भी है, अर्बन मिशन है, और भी काफी संस्थाएं है, सीईडब्ल्यू है, जो अच्छा संस्था में शोध किया है। उन्होंने दिखा रहा है दिल्ली का 22-24%, 22 से 24% का बीच अपना गाड़ियों से आते हैं। तो गाड़ियों तो दिल्ली एनसीआर में चलते हैं ना, अरावली का जंगल के अंदर इतना गाड़ी नहीं चलते हैं, तो अरावली से नहीं आएगा। वो भी दिखा रहा है जे वेस्ट बर्निंग, जो बायोलॉजिकल वेस्ट वेस्ट बर्निंग से एक बड़ा हिस्सा आते हैं। वो भी दिल्ली एनसीआर में शहर का जो वेस्ट बनते हैं उसको जलाया जाते हैं। गांव का वेस्ट इतना जलाया नहीं जाता है, वो जनरली खेतों में डाल दिया जाता है, कंपोस्ट हो जाते हैं। तो तीसरी है रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, सब जो सड़क का धूल है, और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सबसे ज्यादा तो शहर में चल रहा है। तो लेकिन ये बात सही है कि अरावली में जितना पत्थर का जो खदान है, और उसको क्रशर्स जो है उसको तोड़ के छोटा छोटा जो कंक्रीट के लिए ग्रिड बनाया जाता है, ये बहुत बड़े पैमाने चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा है। इसके पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में था तब भी था, उसके पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में था तब भी था। तो ये बहुत सालों से, बहुत दशक से चल रहा है। और इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है पूरी दिल्ली एनसीआर। आप जानते हैं यहाँ बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से शुरू करके, हाईवे से शुरू करके, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, क्या क्या नहीं बन रहा है। और ये सब बनने के लिए आपको पत्थर चाहिए, मतलब पत्थर का स्लैब भी चाहिए, पत्थर का टुकड़ा भी चाहिए जो कंक्रीट के लिए होता है। हाँ, और इसके चलते अरावली का ऊपर एक अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है। जो अरावली को खोल दो, बाकी काफी बड़ा हिस्सा खोल दो, और वहाँ आप पत्थर खोदो और पत्थर क्रश करके पूरा सप्लाई करो। और वहाँ कुछ कुछ एरिया में बहुत हाई क्वालिटी का ग्रेड्स मिलता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का। प्लस कुछ जगह में कंस्ट्रक्शन में स्लैब बनाने के लिए भी कुछ अच्छा पत्थर मिलता है। तो प्लस लाइमस्टोन कुछ जगह में मिलता है, जो सीमेंट के लिए, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, सीमेंट फैक्ट्री के लिए आइडियल है। तो जैसे राजलवास जो गांव में अल्ट्राटेक, जो वहाँ उसका बगल में सीमेंट फैक्ट्री बनाया, जिसका खिलाफ आंदोलन करके लोगों ने अभी अभी सक्सेसफुल हुआ, मुझे भी बुलाए थे, हम लोग भी गए थे वहाँ दिखाने के लिए, जो हाउ डू यू, आपको पोल्यूशन कैसे मेजर करना है, कैसे सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो अरावली का एक कंट्रीब्यूशन, स्टोन क्वेरीज एंड स्टोन क्रशिंग, वहां से जरूर आते हैं, लेकिन वो नया बात नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो रेखा गुप्ता आ जाए बीजेपी का, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहे आपका,
और उसके पहले शीला दीक्षित रहे, ये नया बात नहीं है, ये पार्टी के साथ बदलते नहीं है, बदला नहीं है, ये चल रहा है। तो बाकी जो पोल्यूशन वो दिल्ली एनसीआर का अपना है। और ये भी गलत बात है जो यू ऑल्सो मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, आई थिंक, दैट द थर्ड डेजर्ट विल extend to Delhi if the Aravalli is gone, which is also not correct, because जो पिछले कुछ सालों का क्लाइमेट चेंज का चलते जो चेंज देखा जा रहा है, एक्चुअली थर्ड डेजर्ट धीरे धीरे ग्रीनिंग हो रहा है, क्योंकि शहर में बारिश, पूरा पश्चिम राजस्थान में बारिश बढ़ रहा है, और बारिश बढ़ने का साथ साथ वहाँ ग्रीनिंग मतलब वेजिटेशन वहाँ बढ़ रहा है। और इसको आंकड़ा है, डेटा है, मतलब पिछले 20 सालों में थर्ड डेजर्ट लेस ऑफ ए डेजर्ट बना है, मतलब उतना खतरनाक, मैंने उतना, सॉरी, डेजर्ट नहीं है, धीरे धीरे एक एरिड लैंड में बदल रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज में एक स्लो प्रोसेस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के ड्राइविंग ये फैक्टर है। तो थर्ड डेजर्ट दिल्ली तक स्प्रेड कर जाएगा अरावली को काटने से, वो बात सही नहीं है। लेकिन अरावली काटने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, अरावली का इससे नुकसान होगा। वाटर रिचार्ज के लिए अरावली प्लेज ए मेजर रोल, क्योंकि दैट होल एरिया, there are whatever rainfall it gets, that landform, because it is up and down, there are trees, forest, so it helps in water recharge, and for a large area of Rajasthan and Haryana, it also holds lot of water, groundwater, during the monsoon season. तो बरसात का पानी को रिचार्ज करना, इतनी बड़ी एरिया का ड्रिंकिंग वाटर और कुछ खेती का पानी देना, ये सब यदि अरावली को काटा जाएगा, यदि तोड़फोड़ होगा, ये भयंकर नुकसान होगा। और अरावली का जो मैंने लास्ट ये एक बोल रहा था, इसका पीछे एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, इसका ऊपर बहुत अटैक है। यानी ये एक जो बड़े कॉरपोरेट बा उद्योगपति, बड़े कॉरपोरेट सिर्फ नहीं, छोटे भी है, इनका नज़र है, और इसको ये लोग करे जा रहा है, इसके लिए पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं। और हमारा मंत्रालय तो अभी क्लियरेंस देने के लिए ही बैठा है, पर्यावरण क्लियरेंस का मंत्रालय बन चुका है। तो जितना जल्दी क्लियरेंस दे पाएंगे मोदी जी का उतना फेवरेट बन जाएंगे। जैसे जावड़ेकर बहुत ज़्यादा क्लियरेंस देने वाले मंत्री होके उठे थे, फिर अभी गायब हो गए। तो ये एक उनको काम बन गया। और दूसरा जो टारगेट है वो है, बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में आप जानते हैं पैसा बहुत है, जैसे कोई भी बड़ा शहर है उसका सैटेलाइट सिटीज, उन्हें लाखों लोगों के पास बड़े अच्छा पैसा है, उनको एक टारगेट ये भी है, और बिजनेस हाउसेस का, इनके लिए लग्जरी हाउसिंग, जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट फेसिंग, अब यदि हाउसिंग बनाएंगे वहाँ फ्लैट का कीमत बा विला का कीमत बहुत बढ़ेगा। हाँ, वहाँ रिसोर्ट बनाएंगे, लग्जरी रिसोर्ट, वहाँ ये सब चलते रहेगा, वहाँ होटल बनेगा जिसको फॉरेस्ट का व्यू होगा, हाँ, रिवर व्यू होगा। तो ये सब के लिए उनको चाहिए अरावली में क्लियरेंस। और ये मैंने फिर से बताऊंगा हिंदी में, ये ये जो मंत्रालय ने, एमओएफसीसी ने जो प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, ये मुझे पता नहीं चला, मैं बहुत सोचने का कोशिश किया, ये महामहिम जज साहब ने ये कैसे इनको माना। तो मुझे लगा, शायद उनको लगा जो अरावली के फॉरेस्ट में जो जानवर है वो 100 मीटर का ऊपर से जंप करके दूसरा 100 मीटर में जाएंगे, क्योंकि 90% 100 मीटर से नीचे है, तो उनको नीचे उतरना नहीं है, एक पहाड़ी से जंप करके दूसरा पहाड़ी जाएंगे, तभी जाके वो अरावली में रह पाएंगे। और बाकी जैसे ही नीचे आने जाएंगे वो शहर में घुस जाएंगे। तो वो क्या करे, अभी उनको मेरे ख्याल में उनको तरफ से एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा जंप करने वाले एक कोई मेथड महामहिम सुप्रीम कोर्ट हमें सिखाए, उसके लिए कोचेज और ट्रेनर्स भेजे, नहीं तो हम अरावली से शहर में घुस जाएंगे, क्या करेंगे। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान में लेना चाहिए। बीच में जब शहर हो जाएगा ना, लग्जरी हाउसिंग हो जाएगा, वहां पर माइनिंग तो हो रहा होगा, उनको ऊपर से जाना जंगल कट पड़ेगा ना। जाएगा, तो जानवर हाँ, वाकई उनको एक से ऊपर से जगह नहीं। जाना उनको विंग विंग भी बनाना पड़ेगा। मानिए हाँ, लेपर्ड, लेपर्ड का चिड़िया जैसे विंग भी चाहिए, उड़ के जाए एक 100 मीटर का ऊपर से दूसरा 100 मीटर। ना। यदि जंप करने में दूर है तो उड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी सीखना पड़ेगा उनको। हम्म, उनको सीखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस, न्यायाधीश, आप ही बताना पड़ेगा, खाली 100 मीटर से 100 मीटर हाँ, किस तरह जाएंगे जानवर। और वहाँ काफी हाँ, लोग भी इसके ऊपर डिपेंड है, हमारे जंगल के ऊपर, उनका जीना वगैरह सब कुछ। और पानी का क्या प्रस्ताव होगा, और इस सब का आरावली का दिल्ली प्रदूषण पे, दिल्ली प्रदूषण के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है।
हम ये चाह रहे हैं कि आप जिस तरह बताए, नॉर्थ से जब विंड आता है अक्टूबर के बाद में, तब थार डेजर्ट से थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो आएंगे, अरावली तो उसको ट्रैप। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जब आएगा अरावली, तो वहां थोड़ी बहुत तो वो बीच में रहेगा। हाँ। थोड़ी बहुत तो बीच में रहेगा, थोड़ी बहुत तो दिल्ली को वो प्रदूषण से उससे बचा रही है, बचाता है। हाँ, जैसे मैंने बोला, यदि अरावली रहेगा, उसमें जंगल रहेगा, तो थोड़ा बहुत जो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, मिड अक्टूबर के, अक्टूबर का बीच बा लेट अक्टूबर में, जब हवा का डायरेक्शन, गति बदल जाता है, दिशा बदल जाते हैं, गति नहीं, तब जो वेस्ट से, पश्चिम उत्तर पश्चिम से जो थर्ड डेजर्ट का फाइन सैंड और डस्ट लेके आते हैं, उसको अरावली थोड़ा बहुत रोकते हैं। वो रोल अरावली का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सारी चीज अरावली रोकते हैं, वो भी गलतफहमी है लोगों को। क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर का आसपास जो 11 कोयला बिजली घर है, और उसमें ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है, उसको जो स्टैक एमिशन वहां से बहुत ज्यादा ये पार्टिकुलेट आते हैं, PM 2.5, बाकी गैसेस बहुत आते हैं। और इसका तो अरावली का अंदर में कोई सोर्स नहीं है। तो ये ऊपर से आते हैं, इसका जो आने का लेयर है वो ऊपर से आते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर उठ जाएगा, काफी ऊपर से आते हैं, तो उसको अरावली बहुत ज्यादा रोक नहीं पाते हैं। ये बात है। लेकिन जो डस्ट है, जो थर्ड डेजर्ट से कैरी करते हैं, उसको अरावली रोकते हैं पोस्ट मिड अक्टूबर। लेकिन बाकी समय जो उसके पहले, जब हवा जब साउथ वेस्ट से आते हैं, हाँ, बस साउथ ईस्ट से घूम के जब आते हैं, तब उसको अरावली का रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये भी है, जो थर्ड डेजर्ट से स्प्रेड कर जाएगा दिल्ली तक, वो बात सही नहीं है। क्योंकि थर्ड डेजर्ट में बारिश बढ़ रहा है। पश्चिम राजस्थान में बारिश पिछले कुछ 20 सालों से बढ़ रहा है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज है। और उसके चलते थर्ड डेजर्ट धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। माने डेजर्ट अपने आप ग्रीन हो रहा है। क्यों बढ़ेगा? हाँ, मतलब ये पिछले कुछ दशकों से दिखा जा रहा है, एटलीस्ट 20 सालों से। इसका स्टडी है, वैज्ञानिक शोध भी है, और इसका कारण भी है। तो जब डेजर्ट माने रेगिस्तान अपने आप ग्रीन बन रहा है थोड़ा सा, तो रेगिस्तान बढ़ेगा कैसे इधर? ये जो कहानी जो बहुत सारे लोग बताते हैं ना, इनकी अरावली अभी फैशन बन चुका है। जैसे जो मैंने बोला, जो कुछ 1-2 महीना पहले सोनम वांगचुक का लद्दाख फैशन में था, तो सारे लोग लद्दाख सोनाम कर रहे थे। अभी सारे लोग कहीं भी बैठे हैं भारत में, वो अरावली अरावली कर रहे हैं। उनको समझ कुछ नहीं है कि क्या चीज है, कितना क्या रोल है, कहाँ से कहाँ है। कोई कोई बोल रहा है हिमालय से भी, आप सुनेंगे, हिमालय से भी पुराना। नहीं, इतना हंसी आते हैं, हिमालय सबसे नया पहाड़ है। तो बेबी हिमालय तो सबसे माउंटेन्स, यंग है। नया पहाड़ है वो, बेबी माउंटेन्स कहलाते हैं वो। हाँ, मतलब हिमालय भारत में भी क्यों, दुनिया में वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स। माउंटेन्स हाँ। या। तो हिमालय से भी ज्यादा पुराना है बोलने का कोई मतलब नहीं है। कोई कोई बोलते हैं दुनिया में सबसे पुराना है, जो गलत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली, नो डाउट। हाँ, 1.8 से 2 बिलियन, मतलब 180 से 200 करोड़ साल पहले का है। जबकि हिमालय सिर्फ 5.5 करोड़ साल का ही है। हाँ, हाँ, हिमालय सबसे यंग माउंटेन। माउंटेन है। तो हिमालय से भी बहुत ज्यादा पुराना बोलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब एक छोटे बच्चे से भी बूढ़े हैं। इस ढंग का बोलने का मतलब आप समझ जाते हैं, जो ना कुछ उनको ज्ञान है, ना कुछ, खाली एक अब क्या बोलते हैं, आवेग, इमोशनल, एक भाषणबाजी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये सब मेरे ख्याल में आजकल अरावली फैशन में आने से सभी लोग इसको ऊपर पड़ गए हैं। अभी ये भी देखना है कि कितना दिन अरावली का फैशन चले। अभी दूसरा कोई मुद्दा जब सामने आएगा, तब मेरे लगता है एक बड़ा हिस्सा चले जाएगा। लेकिन अरावली का मुद्दा काफी सीरियस है। सीरियस। मतलब पूरी दिल्ली एनसीआर के लिए। और ये भी सही है, जब तक आप ऑल्टरनेटिव्स में जा नहीं पाएंगे, जैसे स्टोन चिप्स, जो ग्रिड्स, उसको ऑल्टरनेटिव्स हमें डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो किसी ना किसी तरीका से मनीड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पावर मिलके स्टोन को तोड़े, मैंने पहाड़ को तोड़ के पत्थर, टुकड़ा टुकड़ा पत्थर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उसको हमें ऑल्टरनेटिव भी करना पड़ेगा, साथ साथ कानूनी ढंग से प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। दोनों काम साथ साथ करना पड़ेगा। दोनों काम साथ साथ करना पड़ेगा, और ये फैशन अरावली हो गया है। और न्यायाधीश, आई थिंक द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अरावलीज एट द सेम टाइम, व्हाई दिल्ली इज really becoming polluted, really polluted. It is the most polluted capital city in the entire world. Why?
Is it not because of its own vehicles, sand, dust, and construction material? Honorable Prime Minister of India is again constructing a new Prime Minister's residence at the cost of 450 crores. How much dust and how much public money is being wasted there? Like that, you have seen the most fashionable, luxurious MP quarters, which I have never seen everywhere. Such huge MP quarters. That is why before we used to have that landscaping, huge houses, and even the judges and all, how they used to say that huge landscaped villas type of houses. So these are all the things which the judges should understand. What are the reasons for Delhi becoming so polluted, air quality index rising beyond, and as clearly mentioned by Soumya Dattaji, the particulates below 2.5 only they will enter, not about 10, which comes from Aravalli stone crushing. And but from where does this 2.5 will come? From the coal thermal plants located, situated in and around Delhi, like Haryana, Rajasthan, and Delhi and all, which they say they give energy. But at the same time, it is causing pollution and more number of cancer cases are being seen. And these are the major pollutants for Delhi to become the most polluted capital city in the entire world. Instead of understanding this, the nature and naturalities, the courts or the politicians are getting crushed by the mining interests, cement and sand mafia who are funding these political parties, not just from BJP. This is age old, right? From Congress, BJP, Aam Aadmi Party, whoever is there, they are gaining money. And those luxurious, those people with money, they are also trying for to go for luxurious houses, crisscrossing Aravalli, and that is becoming really destructive for the other populace to live in that region. So these are the selfish aspects, man-made things, disasters. So Delhi is literally sinking. Last word, what you would like to say, sir? We have just 1 minute. See, we have to clearly understand that this people's response is very welcome, because now a lot of people in India has woken up to this destruction. But I only hope that this do not become a fashion. This do not die out soon as Aravalli, because the environmental destruction in India is far, far beyond Aravallis. And people didn't wake up when Hasdewaran is being deforested by Adanis. Thousands of hectares, the trees are being destroyed and mining is going on. So I hope that with this, people's interest will be rekindled for all kinds of environmental destruction. And there will be a little more sense that we have to strike a balance. And this kind of quote unquote development cannot go on. We have to change course. And that has to be adopted first by the moneyed people. And this will be required by the power of people through legal and other methods, because individual actions will not change much. It will have to be a systemic change, and that change can only come if very large number of people can rise up, understand, and then force the governments. So I hope we can go towards that through this kind of large scale public emotional awareness. Thank you. It's emotional awareness. And anyone who's differing with us, you can call me on 9440465339. We will connect you from wherever you are, and we will bring out those different opinions also. Do support DRTSPR channels. They are all in larger public interest.